Okay, Assalamu alaikum students. So let's get started with May June 2024 IGCSE Physics Paper 2 Variant 3 MCQ paper of 45 minutes. So let's start with it. Let's zoom in a bit. A student measures the volume of a small irregularly shaped stone. Which apparatus must be used? बेटा एक irregularly shaped stone का volume measure करना है तो कौन सा apparatus use करें? A measuring cylinder filled with water. B is your answer. Which quantity is a vector quantity? Electric field strength. A is your answer. An athlete runs 2.4 kilometers in 12 minutes. What is the average speed? बेटा average speed किस तरह निकालते हैं? Do you remember? Average speed का formula क्या होता है? Total distance over total time. Can you realize the total distance here? We will have to convert it into meters. Beta, total distance kilometers में given है, but we will have to convert it into meters because all the answers are in meters. So this will become 2.4 into 10 raised to the power of 3. And the time we will have to convert into seconds क्योंकि सारा का सारा time जो है वो seconds में तो हमें minutes को seconds में convert करना पड़ेगा 12 into 60. Calculate your average speed बेटा average speed निकालो शाबाश 2.4 into 10 raised to the power of 3 divided by 12 into 60. Your average speed comes out to be 3.3 meters per second. B is your answer. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी. The graph shows how the speed of a car changes during a period of 50 seconds. Okay, how the speed of the car changes during the period of 50 seconds. Which row gives the car's greatest accelerations and the car's greatest deceleration? बेटा कार की ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन का रीजन कौन सा है और ग्रेटेस्ट डिसैलरेशन का रीजन कौन सा है? कैन यू रियलाइज दैट द ग्रेडियंट, अच्छा ये की पॉइंट याद है सबको, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. कैन यू रियलाइज द मैक्सिमम पॉजिटिव ग्रेडियंट, ये वाला रीजन है. जिस रीजन में ग्रेडियंट मैक्सिमम पॉजिटिव है वो ये येलो वाला रीजन है. कैन यू कैलकुलेट दिस ग्रेडियंट? दिस इज 0,0. This is 15, comma 20. Can you calculate this gradient in this yellow region? Yes. Hanji. Can you calculate this? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. This comes out to be 1.3 meters per second square. Option A or B cancel out. Now you have to calculate the greatest deceleration. बेटा greatest deceleration निकालने के लिए we have to see the line with the most negative gradient. बेटा ग्रेटेस्ट डिसैलरेशन निकालने के लिए हमने ऐसी लाइन चूज करनी है जिसका ग्रेडियंट मोस्ट नेगेटिव है. ये सबसे ज़्यादा स्टीप है और नेगेटिव डायरेक्शन में इसका ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा है. हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? This point is 45, comma 15 in the y-axis. This point is 50 in the x-axis. y-axis में 0 है. क्या आप इसका भी ग्रेडियंट निकाल सकते हो? y2 minus y1, x2 minus x1. ये क्या हो जाएगा बेटा? -3 meters per second square. D is your answer. Your greatest acceleration is 1.3, greatest deceleration is 3. You have your answer as D. Which statement about gravitational field strength G is correct? कौन सा statement about gravitational field strength G is correct? G is equal to mass over weight? No. G is equal to mass into weight? No. G is defined as the mass per unit force? No. G is equal to the acceleration of free fall? Yes. Which property of an object cannot be changed by applying forces? Mass. Mass of an object cannot be changed by applying forces. अब यहाँ पे आ जाओ. अच्छा जी क्या लिखा हुआ है? A small ball of mass 0.1 kg traveling horizontally at a speed of 600 meters per second. एक 0.1 kg की बॉल है that is traveling at a speed of 600 meters per second. It strikes a stationary wooden block of 1.9 kg. अच्छा जी आपके पास ये 1.9 kg का ब्लॉक है दैट इज स्टेशनरी एंड ऑल ऑफ दिस इज बिफोर कोलिजन का सिनेरियो. ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ. दिस इज द बिफोर कोलिजन का सिनेरियो.
before collision. Perfect. All of this is before collision का scenario. ठीक है. The ball stays in the block. What is the speed of the ball and the block after the impact? Okay, so after collision क्या हो रहा है? What is happening after collision? The ball and block have combined together. Combined mass क्या हो जाएगा? 0.1 plus 1.9. The combined mass is 2 kg. You have to calculate the combined velocity v. How will you do that? कैसे करोगे? First of all, you will say the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. बेटा before collision आपका क्या momentum होगा? Mass of 0.1 into the velocity, that is 600, plus mass of 1.9 into the velocity, that is 0, because the 1.9 kg wala mass is initially at rest. What will be the momentum after collision? Mass of 2 kg into the velocity of v. This becomes zeroed out. So 0.1 into 600, this becomes 60 divided by 2 is equals to your velocity. 30 meters per second comes out to be your velocity. A is your velocity. Simple. An object taken underwater will be damaged if the total pressure acting is greater than 2.1 megapascals. बेटा अगर आपका टोटल प्रेशर ग्रेटर हो रहा है देन 2.1 मेगापास्कल द ऑब्जेक्ट विल ब्रेक. What is the maximum depth that the object can be taken underwater before it breaks? Atmospheric pressure is this, the density of water is this. Perfect. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू रियलाइज टोटल प्रेशर दो हिस्सों से बना हुआ होता है. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड. टोटल प्रेशर क्या है? 2.1 मेगा पास्कल्स. 2.1 10 raised to the power of 6. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 10100 pascals plus the pressure due to liquid. Let's take this to the other side. 2.1 10 is the power of 6 minus 100 is equals to the pressure of the liquid. Can you calculate the pressure of the liquid? आप प्रेशर ऑफ द लिक्विड निकाल सकते हो. क्या होगा? यस, प्रेशर ऑफ द लिक्विड 199,900 pascals. तो सर हमने यहाँ पे क्या किया? देखो बेटा आपका टोटल प्रेशर जब 2.1 मेगा पास्कल के इक्वल होगा द ऑब्जेक्ट विल गेट डैमेज. अब टोटल प्रेशर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड. क्या आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है? यस, पुट इन कर दो. What is the maximum pressure due to the liquid which the object can survive? 199,000 pascal. अब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनटू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड. 199,000. डेंसिटी क्या है? 1000. बच्चे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? 9.8. कैन यू कैलकुलेट द डेप्थ एच? डेप्थ निकाल सकते हो? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं. एच कम्स आउट टू बी 199,000. 1000 into 9.81. कैन यू कैलकुलेट द डेप्थ? हाँ जी, डेप्थ निकाल सकते हो. यस बेटा, द डेप्थ कम्स आउट टू बी 204 meters as your depth. B is your answer. आगे बढ़ते हैं. A piece of solid melts to become a liquid. ठीक है, solid melt कर रहा है to become a liquid. How do the particles of metal or their behavior change? बेटा particles of metal का behavior किस तरह change होता है as you are going from a solid to a liquid? The increase in size. नहीं भाई, particle कभी भी increase या decrease in size नहीं होते. They move around each other. B is the correct answer. बेटा जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो आपके पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन से निकल के ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं. एज यू गो फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड योर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वाइब्रेटरी टू ट्रांसलेटरी मोशन. और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? द पार्टिकल्स मूव अराउंड ईच अदर. बी इज योर आंसर. Brownian motion of particles is observed
Which statement describe the movement of particles? The particles all travel in a curved path? No. The particles move randomly? Yeah, that's correct. The particles all move in the same direction? No. D is your answer. आगे बढ़ते हैं. A fixed mass of air in a cylinder is compressed by a piston so that the volume of the air decreases at constant temperature. How do the air particles now collide with the cylinder walls? बेटा अगर आपका temperature constant है, what does this mean? If your temperature is constant, that means you have a constant kinetic energy. That means your velocity remains constant. और अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, डू यू रिमेंबर दिस लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, pressure will increase. If the pressure increases, the molecules collide more often with the same velocity because the temperature is same. 12 पे आ जाओ. Which graph shows the relationship between pressure and volume? We have done multiple times pressure and volume का graph. Inverse proportionality होता है. B is your answer. Let's further move ahead. The liquid in a thermometer rises when the thermometer is placed in hot water. What causes this? बेटा liquid rise क्यों करता है in a thermometer? When the thermometer is heated. Because as the thermometer is heated, the liquid expands, hence it rises. 13 का answer is C. Which statement describes what happens as ice at 0 degree centigrade melts to become water? बेटा जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही होती है तो क्या होता है? Energy is absorbed and the temperature remains constant. A is your answer. हमेशा याद रखो, if you want to make a key point here, you can make a key point here. During state change processes, during state change processes, during state change processes, the temperature remains, the temperature remains constant. जब भी स्टेट चेंज का प्रोसेस हो रहा होगा, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर दिस. Which row explains how increasing the surface area of a fixed volume of liquid water and blowing air over the surface speeds up evaporation? अगर आप surface area को increase करोगे तो evaporation किस तरह increase करेगी? Because if you increase the surface area, it increases the number of water molecules close to the surface. A or B cancel out. How will blowing air over the surface speed up evaporation? क्योंकि अगर आप सरफेस पे एयर ब्लो करोगे, दिस विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अबव द सरफेस ऑफ वाटर, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन. डी इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. द टेबल शोज द स्टेट्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, पी क्यू आर एस, एंड वेदर ईच वन कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यूज दिस इंफॉर्मेशन इन द टेबल with comparison. Which comparison of thermal conduction in the material is correct? बेटा always remember कि अगर आपके ऑब्जेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपकी थर्मल कंडक्शन विल बी ग्रेटर. तो यहाँ पे एक छोटा सा की पॉइंट लिख लो, छोटा सा की पॉइंट लिख लो. ऑब्जेक्ट्स हैविंग free electrons will have greater thermal conduction. अच्छा एक और छोटा सा की पॉइंट लिख लो, एक और छोटा सा प्यारा सा की पॉइंट लिख लो कि बेटा सॉलिड्स आर मच बेटर thermal conductors than liquids and gases. बेटा सॉलिड्स जो हैं वो मच बेटर थर्मल कंडक्टर्स होते हैं कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, बिकॉज सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर. एक और छोटा सा की पॉइंट और लिख लो. लिक्विड इज अ बेटर thermal conductor than gas, but a
इसको सर लिखो, लिक्विड इज अ बेटर थर्मल कंडक्टर देन गैस, बट अ पुअर, या इसको किस तरह लिखोगे? यू कैन से बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल कि लिक्विड इज अ बेटर थर्मल कंडक्टर देन गैस, बट it is a poor thermal conductor compared to a solid, but it is a poor thermal conductor compared to solids. बेटा हमेशा याद रखो, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है, फिर लिक्विड्स में होती है, फिर गैसेस में होती है। ठीक है, हमेशा याद रखो थर्मल कंडक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है, फिर लिक्विड्स में, फिर गैसेस में। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल विद दीज थ्री की पॉइंट्स। ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हैव अ ग्रेटर थर्मल कंडक्शन। नाउ इफ यू एनालाइज ऑप्शन आर, इट हैज बोथ द फैसेट्स या बोथ द बेनिफिट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सॉलिड भी है। तो यू कैन से आर इज अ बेटर थर्मल कंडक्टर देन क्यू एंड पी। क्यू क्या है? क्यू के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पी के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बोथ आर गैस एंड लिक्विड्स। सी इज योर आंसर। A seismic wave has a frequency of this, speed of this, you have to calculate the wavelength. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v is equals to f lambda. Velocity क्या है? 10, frequency क्या है? 5, lambda निकाल लो। Lambda comes out to be what? 2 kilometers. C is your answer to 17. 17 का आंसर क्या आ गया भाई? C आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। Sound waves will diffract when going through a gap or passing the edge of a barrier. What is the size of wavelength which gives the most diffraction in each case? बेटा किस केस में आपके पास मोस्ट डिफ्रैक्शन आएगी? व्हेन यू आर पासिंग थ्रू अ गैप, आपकी वेवलेंथ सिमिलर टू गैप साइज होगी, तो देन यू विल हैव द मोस्ट डिफ्रैक्शन। ए और बी कैंसिल आउट। व्हेन यू आर पासिंग थ्रू द एज ऑफ अ बैरियर, you want the largest wavelength to have the most amount of diffraction. D is your answer. जब भी आप गैप के थ्रू पास कर रहे हो बेटा, तो आपकी जो वेवलेंथ है अगर वो कंपेरेबल है टू द गैप साइज, देन यू विल हैव लार्ज डिफ्रैक्शन। अगर आप एज के थ्रू पास कर रहे हो, द लार्जर द वेवलेंथ द ग्रेटर द डिफ्रैक्शन। 19 पे आ जाओ। A boy is having his eyes tested. A letter is printed on a card placed over his head. He sees the card in the plane mirror placed in front of him. He sees the letter R in the mirror. How is it printed on the card? बेटा अगर मिरर में आपको ये इमेज दिख रही है, तो एक्चुअल प्रिंट किस तरह होगा? कंप्लीट उल्टा, लैटरली इन्वर्टेड। ऐसा कोई ऑप्शन है? बी इज योर आंसर। मिरर में हमेशा चीजें लैटरली इन्वर्टेड हो जाती हैं। ओके। A ray of light is refracted as it enters air from glass. Okay, ठीक है, as shown as it enters air from glass. तो ग्लास आपका फर्स्ट मीडियम हो गया, एयर आपका सेकंड मीडियम हो गया। बेटा हमेशा याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूलाज होते हैं, वन फॉर द फर्स्ट मीडियम साइन आर ओवर साइन आई, वन फॉर द सेकेंड मीडियम साइन आई ओवर साइन आर। अब सर फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम किस तरह डिसाइड करते हैं? हाउ डू वी डिसाइड फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम? बेटा फर्स्ट मीडियम वो मीडियम होता ही है जहां से रे स्टार्ट हो रही होती है, सेकेंड मीडियम वो मीडियम होता है जहां पे रे एंड कर रही होती है। ओके, हाउ कैन यू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम? दिस इज 30 डिग्री, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कैन यू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? बेटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो जी, बिल्कुल सर। Glass is the first medium. The refractive index of the first medium is sine of 50 divided by sine of 30. What does your refractive index comes out to be? Sine of 50 divided by sine of 30. What does your refractive index comes out to be? 1.53. अच्छा जी, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला पढ़ाया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by the speed of light in what? The specified object.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.53। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है? 3 × 10⁸ कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? यप, speed of light in glass is equals to 3 into 10 raised to the power of 8 divided by 1.53। बताओ क्या आंसर आता है? 3 into 10 raised to the power of 8। The answer comes out to be 2 into 10 raised to the power of 8 meters per second। 20 का answer is A। A converging lens is being used as a magnifying glass. Which statement is correct? The image is further away from the lens than the object is। Yes, image जो है लेंस से बहुत दूर होगी compared to the object। A is your answer। Which colors of visible light are in correct order of increasing wavelength? बेटा increasing wavelength के order में कौन से colors हैं? Do you remember this acronym? Web Gear। Do you remember this acronym? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। As you go down this acronym, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि एक्रोनिम ही नहीं पता होगा लोगों को। दिस इज वॉयलेट, दिस इज इंडिगो, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन, दिस इज येलो, दिस इज ऑरेंज, दिस इज रेड। As you go down the acronym, your wavelength increases, frequency decreases। Okay. So हमने increasing wavelength निकालनी है। If you realize this option C, indigo, then green, yeah, the wavelength is increasing, then red। C is your answer। Indigo की smallest wavelength, the red की greatest wavelength, green we have in the middle। Yeah, C is your correct answer। Which quantities increase in magnitude going from left to right? You have microwaves, then infrared, then X-rays। As you are going from left to right, आपकी frequency increase हो रही है। B is your answer। Which row gives the typical value of the speed of sound at room temperature in the material stated? बेटा हमेशा याद रखो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस जो है वो सबसे कम होती है। Then you have medium speed of sound in a liquid, and then you have the greatest speed of sound in solids। greatest speed of sound क्या है? 5100। medium क्या है? 1500। air में, gas में क्या है speed of sound? 340। A is your answer। In which direction do the compass needle points? हमेशा याद रखो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ नॉर्थ जाती हैं, इनटू साउथ जाती हैं। These compass needles are pointing correct। B is your answer। आगे बढ़ते हैं। Students are asked for a statement about magnetic fields। Three statements are listed। A magnetic field is described as a region in which the stationary electric charge experiences a force। No. The direction of magnetic field at a point is the direction of the force on a south pole। No. It is the direction of force on a north pole। The relative strength of a magnetic field is shown by the spacing of the magnetic field lines। Yes. Only three is correct। A student rubs a plastic rod with a cloth। The rod becomes electrically charged and is attracted by a negatively charged object। बेटा अगर रॉड जो है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब रॉड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए और बी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएंगे। द रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। डी इज योर आंसर। जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। Which circuit shows the direction of convection current and the flow of electrons? Always remember convection current flows from positive to negative। Flow of electrons क्या होता है? Negative to positive। कौन सा डायरेक्शन करेक्ट मार्क है? If you analyze option B, convection current is flowing from positive to negative। Electrons are flowing from negative to positive। B is your answer। Let's further move ahead। A cell has an electromotive force of 1.5 volts। How much energy is dissipated by the cell in driving 6 coulombs of charge around a complete circuit? So how will you calculate that? Voltage is equals to work done over charge। Voltage क्या है? 1.5, charge क्या है? 6। Can you calculate the work done? 9 joules is your work done। C is your answer। ठीक है? All good? आगे बढ़े? चलो। A metal has a length L, cross-sectional area A, resistance R। What is the resistance of a metal wire of the same material that has twice the length of the cross-sectional area? Sir, what do you mean by that? बेटा अगर आपकी लेंथ डबल हो गई है दैट मीन्स व्हाट?
रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ डबल हो गई, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी. व्हाट इज द सेकंड फैक्टर दैट वी हैव टू अकाउंट फॉर? क्या आप रियलाइज कर रहे हो एरिया हाफ हो गया है? डू यू रिमेंबर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर एरिया हाफ हो गया है, योर रेजिस्टेंस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन. 2R से 4R हो जाएगी रेजिस्टेंस. डी इज योर आंसर. द डायग्राम शोज टू सर्किट. Each relay is normally open when there is no current in the circuit. Relay क्या है भाई? ये वाली चीज़ है, ये चीज़ है. Which environmental conditions will cause the light emitting diodes in circuit 1 and 2 both to emit light? अब बेटा यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को रिले का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, तो लेट्स रिवाइज दैट एज वेल. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू रियलाइज दिस इज व्हाट? दिस इज एन LDR. अच्छा जी, LDR की क्या प्रॉपर्टीज होती थी? यस, डू यू रिमेंबर? एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करती थी, क्या होता था? LDR की रेजिस्टेंस कम हुआ करती थी. बेटा जैसे जैसे आपकी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज किया करती थी शहजादों, LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज किया करती थी. सो इफ द LDR हैज अ लो लाइट इंटेंसिटी, बच्चे अगर LDR की लाइट इंटेंसिटी लो है, लो लाइट इंटेंसिटी, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाई. इफ द LDR हैज अ हाई रेजिस्टेंस, इसमें वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? हाई. If the LDR has a high voltage, the relay will also have a high voltage. This coil will get magnetized. अगर रिले को हाई वोल्टेज मिल जाएगा तो कॉइल क्या कर जाएगी? मैग्नेटाइज कर जाएगी. It will attract the switch. The switch will close. The LED will start working. Light emitting diode will start working. तो ऑप्शन सी और ए कैंसिल आउट हो गए. Now what is this, sir? This is a thermistor. थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी याद है कुछ? थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी याद है बेटा? इन अ थर्मिस्टर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज योर रेजिस्टेंस वुड डिक्रीज. परफेक्ट. बेटा अब अगर थर्मिस्टर का टेम्परेचर लेट से इंक्रीज हो रहा है, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी. द वोल्टेज अक्रॉस द थर्मिस्टर विल डिक्रीज. If the voltage across the thermistor decreases, what will happen to the voltage across this resistor? Increase कर जाएगा. एक कंपोनेंट के अक्रॉस अगर वोल्टेज डिक्रीज करेगा इन सीरीज, तो दूसरे कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा. If the voltage across this resistor increases, the voltage across this magnetic coil will also increase, causing magnetism. The switch will close. This LED will also light up. तो थर्मिस्टर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई. लाइट इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? LDR की लो. 31 का आंसर शुड बी बी. इट इज बी इन द मार्किंग स्कीम. लेट्स मूव अहेड. A transformer is 100% efficient. Which pairs of equations are valid for both transformers? IPVP is equals to ISVS. Yes, ये valid है. क्यों? Because the power in the primary coil is same as the power in the secondary coil. ये तो valid है. Let's check out this equation. Can you rearrange this? VP over VS, I have brought this to the downside, is equals to NP over NS. This was written in the notes as well. This is also correct. Option A is your answer. Which diagram shows the structure of a neutral atom? Neutral atom में क्या होता है? Number of protons is equals to number of electrons. Option A को देखो, कितने protons हैं? 1 2. कितने electrons हैं? 1 2. It is a neutral atom. A is your answer. Let's move ahead. What is nuclear fission? Nuclear fission is the splitting of a nucleus to create two smaller nuclei. D is your answer. अच्छा जी, the diagram represents the path of three types of ionizing radiations X, Y, Z through a magnetic field. अच्छा जी, आपके पास 3 radiations हैं और उनका path given है in the magnetic field X, Y and Z. The three types of radiations are alpha, beta and gamma. Always remember, जो radiation magnetic field में सबसे ज़्यादा deflect करेगी वो होगी beta. The radiation which deflects by the least amount is alpha. और जो radiation undeflected जाती है that is gamma.
Which statement about the ionization radiation is correct? X is positively charged, no. Beta is negatively charged. Y is negatively charged, no. Gamma का कोई charge नहीं होता. Z has the most strongly ionization power, yes. Alpha की ionization power strongest होती है. C is your answer. Which row correctly matches the three radioactive sources to their uses? बेटा अल्फा पार्टिकल का क्या यूज होता है? स्मोक अलार्म सिस्टम. ए और बी कैंसिल आउट. बीटा पार्टिकल्स का क्या यूज होता है? दे आर यूज टू मॉनिटर द थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम फॉल. गामा रेडिएशंस का क्या पर्पस होता है? दे आर यूज टू डिटेक्ट कैंसर. सी इज योर आंसर. Why are some radioactive sources stored in boxes made from lead? हाँ जी, कुछ रेडियोएक्टिव सोर्सेज जो हैं वो बॉक्सेस में क्यों स्टोर होते हैं मेड फ्रॉम लेड? क्योंकि lead absorbs emission from the radioactive sources. A is your answer. The average distance from the earth to the sun is this. This is your r. You have to calculate the orbital speed. बच्चा कैसे निकालोगे? 2 pi r over capital T. 2 pi r क्या है भाई? 1.5 10 is the power of 11. अर्थ को कितना टाइम लगता है टू रोटेट अराउंड द सन? हाँ जी, अर्थ कितना टाइम लेता है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन? 365 डेज. 365 into 24 hours in each day, 60 minutes in each hour, multiplied by 60 seconds in each. Multiplied. Oh, ho. Can you realize we have done a mistake here? आपने आंसर निकालना है किलोमीटर पर डे में. So it is better not to convert your time in seconds. 365 days ही रहने दो. Let's see what your answer comes out to be. और आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हो. If you want to calculate your answer just in one go, आप इस मीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर दो. Whenever you are converting meter into kilometer, what do you do? Divide by 1000. 1.5 into 10 is the power of 11. Divide by 1000. ये कितने किलोमीटर हो गया? हाँ जी, 1.5 10 is the power of 11 divided by 1000. ये कितने किलोमीटर हो गया बेटा? 1.5 10 is the power of 8. 2 pi 1.5 10 is the power of 8 divided by 365. Do you realize कि मैंने टाइम को डेज में और डिस्टेंस को किलोमीटर में क्यों रखा है? बिकॉज माई फाइनल आंसर इज इन किलोमीटर पर डे. दिस कम्स आउट टू बी 2.6 10 is the power of 6 kilometers per day. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. In which order are the objects listed formed during the life cycle of a star? First of all, protostar form होता है. COD cancel out. After a protostar, you have a stable star, then you have a red giant, then you have a supernova. B is your correct answer. What is the distance traveled by light in 1 year? Let's calculate that. Distance is equal to the speed of light into the time of 1 year. Speed of light क्या है? 3 into 10 is the power of 8. What is the time of 1 year in seconds? 365 days. 24 hours in each day, 60 minutes in each hour, 60 seconds in each minute. 3 into 10 is the power of 8 into 365 into 24 into 3600. Your answer comes out to be 9.46. 10 is the power of 15 meters. C is your answer. If you have any questions, you can ask in the chat. Varna, this marks the end of this paper.